जमाने का जिक्र है। बहुत दूर एक सरजमीन में दो बहुत अच्छे दोस्त रहा करते थे और उन दोनों के नाम के और गिरदा थे। के और गिरदा ने अपने सहन में एक एक करके गुलाब का फूल लगाया। ये गुलाब के फूल उनके साथ ही बड़े होंगे। जैसे ही गर्मियां खत्म हुई तो सर्दियों के दिन आ गए और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो गई। सर्दियों की रातों के दौरान के और ग्रेडा का सबसे पसंदीदा काम था दादी से कहानियां सुनना। ये ठंड और बर्फ आती कहाँ से है दादी माँ? ग्रेडा ने सवाल किया। बहुत दूर से आती है। उसकी दादी ने जवाब दिया और कहानी सुनाना शुरू हो गई। बहुत पहले एक महल हुआ करता था जहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और स्नो क्वीन उस महल में अकेले रहती थी जिसको उसने अपने जादू से बनाया था। स्नो क्वीन बहुत खूबसूरत थी और शफाफ थी बर्फ की तरह। लेकिन स्नो क्वीन बहुत पत्थर दिल थी। उस बर्फ के महल में बहुत सारे पोशीदा राज और कहानियां छुपी हुई थी। बर्फ का शीशा उनमें से एक था। स्नो वाइट इस जादुई बर्फ के शीशे से दुनिया की तमाम चीजें देख सकती थी। और उसी वक्त ग्रेडा को ऐसा लगा कि स्नो क्वीन उसे खिड़की से देख रही है। के दादी माँ, वहाँ देखें, स्नो क्वीन हमें खिड़की से देख रही है। अरे कोई बिल्ली होगी सर्दी से परेशान। दादी माँ, स्नो क्वीन सच में यहाँ आ सकती है? आने दो उसे, मैं उसे फौरन चिमनी में डाल दूंगा और वो पिघल के पानी पानी हो जाएगी। अपने बर्फ के शीशे से देखते हुए स्नो क्वीन ने वो सब सुन लिया जो के ने कहा। तो तुम मुझे चिमनी में डालोगे और पानी बनाओगे? हाँ। मेरे शीशे के टुकड़ों, जाओ मेरे जादू से उस लड़के को ढूंढ के लाओ। उसकी आंखें और दिल मुझे लाके दो। उसकी नजर में बुराई भर दो और उसके दिल से प्यार को निकाल दो। ये मेरा हुक्म है। स्नो क्वीन ने अपने जादुई शीशे को हुक्म दिया। अचानक एक बर्फीला तूफान ग्रेडा के घर की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। बर्फ के टुकड़े तेजी से ग्रेडा की तरफ बढ़ने लगे। ये देखने के लिए कि बाहर हो क्या रहा है, के ने खिड़की खोली और ग्रेडा फौरन से चिल्लाई, के रुको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी आंख में कुछ चला गया है। उफ, मेरा दिल, ये क्या हो रहा है? स्नो क्वीन के जादुई शीशे ने अपना काम कर दिया था। के की आंखें उन टुकड़ों से टकरा चुकी थीं और के यकायक तब्दील हो गया था। ग्रेडा ने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है, तो के चिल्लाकर बोला, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, अकेला छोड़ दो मुझे। ये एक अजीब सी बात थी क्योंकि के ने कभी भी ग्रेडा से इस तरह बात नहीं की थी। ग्रेडा समझ नहीं पा रही थी कि के ऐसा कर क्यों रहा है। के का यही बर्ताव कल सुबह तक चलता रहा। जब के अपना स्ले गार्डन से निकाल रहा था, ग्रेडा ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। के ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और वो अपने स्ले पर बैठकर वहाँ से चला गया। ग्रेडा उसके पीछे भागी लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। अचानक से के सामने न जाने कहां से स्नो क्वीन आ गई और के उसका पीछा करने लगा। ग्रेडा आखिर कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो दोनों गायब हो चुके थे। स्नो क्वीन के को अपने बर्फ के महल में लेके जा रही थी। ग्रेडा ने खिड़की में खड़े खड़े दिन गुजार दिए, के का इंतजार करते करते। बहुत सारे दिन और महीने गुजर गए, यहाँ तक कि सर्दियाँ भी खत्म हो गईं, पर फिर भी के का कोई नामो निशान नहीं था। ग्रेडा से इंतजार नहीं हुआ और उसने ये फैसला कर लिया कि वो अब अपने दोस्त को ढूंढ कर ही रहेगी। उसने अपनी दादी को अलविदा कहा और के को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। बहादुर ग्रेडा ने रास्ते में हर एक परिंदे से पूछा कि शायद उन्होंने के को देखा हो।
आखिरकार वो एक नदी के पास आ पहुंची। उसने इधर उधर देखा और देखा कि आसपास कोई नहीं है जिससे वो के बारे में पूछ सके। उसने नदी से भी पूछा लेकिन उसको जवाब नहीं मिला। इतने में एक कबूतर उसके पास आकर बोला, ग्रेडा ने अपना पसंदीदा नेकलेस निकाल के नदी को गिफ्ट दे दिया। अचानक से एक मौजज़ा हुआ और न जाने कहां से एक कश्ती सामने आ गई। ग्रेडा ने सोचा कि नदी को उसका गिफ्ट पसंद आया और नदी ने उसको बदले में गिफ्ट दिया है। ग्रेडा की कश्ती पे चढ़ते ही कश्ती खुद ब खुद चलने लग गई। कश्ती जाके एक किनारे पे रुक गई और यहाँ एक खुफिया बाग था जहाँ पे रंग बिरंगी फूल थे। ग्रेडा ने इससे पहले इतना खूबसूरत बाग कभी नहीं देखा था, मगर अभी भी कुछ कमी थी। जितने भी फूल थे उनमें खुशबू नहीं थी। बाग के दूसरी तरफ से एक औरत ग्रेडा की तरफ आ रही थी। वो इस बाग की मालकिन थी। खुशामदीद छोटी प्यारी बच्ची। उसने ग्रेडा से बड़ी खुशी खुशी मुलाकात की और अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसके बाग के फूलों में से खुशबू आ रही मैं है। माफी चाहती हूँ कि आपकी इजाजत के बगैर अंदर आ गई। ग्रेडा ने ऐसा कहा। कोई बात नहीं बेटा, मुझे अच्छा लगा कि तुम अंदर आ गई। काफी वक्त हो गया है कि यहाँ कोई आया नहीं। मुझे बताओ कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? ग्रेडा ने उस औरत को बताया कि वो अपने दोस्त के को ढूंढ रही है, लेकिन उस औरत ने कहा था कि उन्होंने ग्रेडा के अलावा सालों से यहाँ किसी को नहीं देखा। क्या वाकई? मुझे वापस सड़क की तरफ जाना चाहिए। मुझे अपने दोस्त के को ढूंढना है। फूलों की मालकिन ये नहीं चाहती थी कि ग्रेडा यहाँ से चली जाए, इसलिए उसने एक झूठ बोला। क्या तुमने के का नाम लिया? मुझे सोचने दो, मैंने शायद उसे कहीं देखा है। ग्रेडा ने उस औरत को सब कुछ बताया। जैसे ही फूलों की मालकिन ने स्नो क्वीन का नाम सुना, वो बहुत परेशान हो गई। स्नो क्वीन? उसको यहाँ से दूर ही रहने दो, बर्फीली चुड़ैल। उसकी वजह से मेरे फूलों में खुशबू नहीं रही। फिर अचानक से उस औरत का दिल करा के ग्रेडा के बाल बनाए। ग्रेडा को समझ नहीं आया कि उन्होंने जिद क्यों करी। ग्रेडा को ये मालूम नहीं था कि ये कंघी एक जादुई कंघी है। उस जादुई कंघी ने ग्रेडा की सारी याददाश्त गायब कर दी, पर उसकी खुशियाँ नहीं। बाग की मालकिन बुरी नहीं थी, उसने ये सब अच्छे के लिए किया था। जब ग्रेडा नींद से जाग उठी, उसको कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि ये भी नहीं कि वो यहाँ आई क्यों है और आई तो आई कैसे। लेकिन जैसे ही उसने औरत के सर के ऊपर फूल देखा, उसे सब कुछ याद आने लगा। जादू भी सच्चे प्यार के बीच में कुछ नहीं कर सकता। ग्रेडा को ये याद नहीं था कि वो कितनी देर नींद में थी, लेकिन उसकी याददाश्त हल्के हल्के करके वापस आ गई। वो फौरन से नदी के पास जा पहुंची। कश्ती वहीं खड़ी थी, पर ग्रेडा को कुछ नहीं पता था कि कहाँ जाना है और क्या करना है। और उसी वक्त एक कौवा उसके आसपास घूमने लगा, जैसे वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। ग्रेडा उसके पीछे पीछे चलने लगी और वो पहुंचे एक बर्फ के समंदर में। बर्फ के बिल्कुल बीच में वहाँ पे एक बहुत पुराना समुद्री जहाज खड़ा था। उस पे कौवा जाकर बैठ गया। ग्रेडा उसका पीछा करते करते समुद्री जहाज पर चढ़ गई। तो इसके जरिए मैं स्नो क्वीन तक जा सकती हूँ? अचानक कुछ डाकू वहाँ आ गए। उनमें से एक डाकू से ग्रेडा ने बात की। तुम वहाँ जाओगी जहाँ हम जाएंगे, और हम जाएंगे कहीं भी नहीं। उसी वक्त स्नो क्वीन ये कोशिश कर रही थी कि वो के की सारी याददाश्त गायब कर दे। काफी कुछ तो के भूल चुका था, पर ग्रेडा उसकी सोच से नहीं जा रही थी। ग्रेडा, ओ ग्रेडा,
बहुत जल्द तुम्हारा दिल भी ठंडा कर दूंगी, फिर तुम्हें भी कुछ याद नहीं रहेगा। जब ग्रेडा ने अपने दोस्त के बारे में उस लड़की को बताया तो डाकू लड़की ने ग्रेडा से कहा कि तुम अपने दोस्त को अब भूल जाओ, क्योंकि स्नो वाइट से बचना बिल्कुल नामुमकिन था। मैं नहीं भूल सकती, मुझे के को ढूंढना है। ग्रेडा ने ऐसा कहा। डाकू लड़की को ग्रेडा की बातें बिल्कुल समझ नहीं आई और वो चाहती थी कि ग्रेडा यहाँ रहकर उसके साथ दोस्ती कर ले, लेकिन ग्रेडा को अपने दोस्त को जल्द अज जल्द ढूंढना था। मैं उसको ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्योंकि उसकी कोई दोस्त नहीं थी, डाकू लड़की को ग्रेडा की ये जिद बहुत पसंद आई और ग्रेडा की मदद करना चाहिए। अगले दिन की सुबह डाकू लड़की ने ग्रेडा को एक रेनडियर ला के दिया। ये रेनडियर पूरे बर्फ के सल्तनत का सबसे तेज रेनडियर था और डाकू लड़की ग्रेडा के साथ रास्ता दिखाने जा रही थी। मुझसे वादा करो कि तुम उस चुड़ैल को नहीं छोड़ोगी और तुम हमारी शिप को भी बचाओगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगी। ग्रेडा ने ऐसा कहा। रेनडियर को चलाते हुए ग्रेडा अपनी मंजिल तक जा रही थी। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि वो स्नो क्वीन को हराएगी कैसे। काफी लंबे सफर के बाद वो नॉर्थ पोल तक आ पहुंचे। वहां उन्हें एक बूढ़े अंकल मिले। तो आखिरकार तुमने शीशा तोड़ ही दिया। ग्रेडा को समझ नहीं आया कि उन्हें शीशे के बारे में कैसे मालूम था, पर वो जानती थी कि वो सही जगह पर आई है। इसीलिए उसने अपना शीशा निकाला और बूढ़े अंकल को दिखाया। क्या इस शीशे के जरिए मैं उसे खत्म कर सकती हूँ? ये एक जादुई शीशा है। ये सच बताता है, सब कुछ सच बताता है, अगरचे ये छुपा हुआ क्यों ना हो, चाहे कितना ही नीचे क्यों ना हो। क्योंकि सच्चे प्यार के अलावा कोई भी चीज ताकतवर नहीं होती, तो पूरी दुनिया प्यार का साथ देने लग जाती है। ग्रेडा को मालूम हुआ कि स्नो वाइट कौन थी। बूढ़े अंकल की मदद से अगर वो स्नो क्वीन को सच बता दे तो वो उसे हरा देगी, क्योंकि असल में बहुत पहले स्नो क्वीन बहुत अच्छी लड़की थी, खुशियों से भरी। जहाँ भी वो हाथ रखती वहाँ फूल उगना शुरू हो जाते थे और उसकी आंखें सूरज से भी ज्यादा चमकती थीं। और उसका नाम था लीला। लेकिन सबको ऐसा लगता था कि वो छोटी चुड़ैल है, इसीलिए ना कोई उससे बात करता ना उसके साथ खेलता। और लीला अब खुश नहीं रहती थी। वो सब चीजों और सब लोगों को नापसंद करने लगी। और एक दिन उसने एक दुआ करी, जो भी मुझे छुएगा वो बर्फ बन जाएगा। और फिर उसने एक बर्फ का महल बनाया और उसके अंदर रहने लगी, पूरी दुनिया से दूर। ना उसके पास कोई खुशियाँ थी और ना ही कोई दोस्त। ग्रेडा आखिरकार स्नो क्वीन के महल में आ पहुंची। उसने अंदर अपने दोस्त के को देखा और देखा कि वो बर्फ से कुछ बना रहा है। तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। के, मैं हूँ ग्रेडा, क्या तुम्हें याद नहीं? के ने ग्रेडा की तरफ देखा पर वो उसको पहचान नहीं पाया। हा, हा, हा। उसका दिल यहाँ की हर एक चीज की तरह बर्फ का बन चुका है। ग्रेडा ने स्नो वाइट की बात अनसुनी कर दी। उसे जाने दो, वो अब मेरा गुलाम है और मैं तुम्हें भी बर्फ का बना दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। के, I love you। के को हल्के हल्के सब कुछ याद आने लगा। ग्रेडा, हाँ मुझे याद आ गया। गुस्से से स्नो क्वीन ने अपनी छड़ी जोर से घुमाई और उससे निकली एक खतरनाक बर्फ। तभी ग्रेडा ने अपना शीशा निकाला और वो बर्फ शीशे से टकराकर गायब हो गई। यही वो वक्त था। स्नो क्वीन ने ग्रेडा के शीशे में देखा। उसने देखा कि शीशे में स्नो क्वीन नहीं बल्कि ये चेहरा एक खूबसूरत छोटी बच्ची का था। ये चेहरा लीला का था। अचानक से एक मौजज़ा हुआ और स्नो क्वीन दोबारा से लीला बन गई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब मैं जान गई हूँ कि मैं असल में कौन हूँ। अब मैं आजाद हूँ।
अलविदा। के और ग्रेडा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अब से वो हमेशा साथ रहेंगे, एक साथ बड़े होंगे, उन दोनों के फूलों की तरह जो उनके सहन में लगे हुए हैं। जंगल में एक खूबसूरत लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। जब भी वो घर छोड़कर जाती थी, वो अपना रेड कैप पहनती थी जो कि उसकी दादी ने बनाया था। इसीलिए सब उसको लिटिल रेड राइडिंग हुड कहा करते थे। एक नए दिन किचन में जब उसकी माँ खाना बना रही थी, लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी अम्मी के पास आ गई। अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। आज नया साल है। क्या दादी माँ आज रात हमारे साथ चलेंगी? दादी माँ बीमार हैं बेटी, आज रात वो शायद नहीं आ पाएंगी। मैं उनके लिए कुछ कुकीज बना रही थी। क्या मैं दादी माँ को कुकीज दे आऊँ? नहीं बेटी, बाहर बहुत सर्दी है, तुम यहीं रुको, मैं देके आ जाऊंगी। उनको कुछ जड़ी बूटियाँ देनी है जिससे वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाएंगी। प्लीज मम्मा, प्लीज। आपको बहुत काम करने हैं। मैं जल्दी से होके आ जाऊंगी। ठीक है, पर गर्म कपड़े पहनो। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपने जूते और रेड हैट पहना। उसने वो बास्केट उठाई जो कि उसकी माँ ने बनाई थी और वहाँ से चली गई। जंगल का रास्ता मत खोना और अंधेरा होने से पहले आ जाना। ठीक है। बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी। पूरा जंगल बर्फ से भरा हुआ था। लिटिल रेड राइडिंग हुड जंगल में बड़ी खुशी खुशी जा रही थी। जंगल की गहराइयों में एक शिकारी रहा करता था। वो एक भेड़िए को ढूंढना चाहता था जो कि गांव के घरों में घुस जाता था। आज इतनी सर्दी की रात में तुम्हारे लिए निकला हूँ। आज मैं तुम्हें पकड़ के ही छोड़ूंगा और गांव वालों को एक सरप्राइज दूंगा। सभी गांव वालों को डराकर भेड़िया जंगल में अपने शिकार के लिए निकला था। मुझे ये बर्फ पसंद नहीं, कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता। दूसरी तरफ लिटिल रेड राइडिंग हुड अपने रास्ते पर जा रही थी। उसने जंगल में एक हिरन के बच्चे को देखा जो कांप रहा था। हिरन के बच्चे को बहुत सर्दी लग रही थी। अरे हिरन, तुम्हें तो बहुत सर्दी लग रही है। लिटिल रेड राइडिंग हुड हिरन के बच्चे के पास जाकर उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने वो देखा तो वो वहाँ से चली गई। अरे रुको, मत जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने हिरन के बच्चे का पीछा करना शुरू कर दिया। हिरन का बच्चा लिटिल रेड राइडिंग हुड से बहुत तेज था। देखते ही देखते वो गायब हो गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने उस हिरन के बच्चे का पीछा करना जारी रखा, लेकिन अब उसको ढूंढना नामुमकिन था। उसने इधर उधर देखा और उसने देखा कि वो जंगल के ऐसे कोने पर है जहाँ पर वो कभी नहीं गई। बर्फ की वजह से वो नहीं जान पाई कि वो पहले कहाँ थी। उसने अपने पैरों के निशान से पीछे जाने का रास्ता ढूंढा। वो पीछा करती गई, लेकिन कुछ देर बाद वो भी गायब हो गए। और उसी वक्त लिटिल रेड राइडिंग हुड जोर जोर से रोने लगी। अब मैं क्या करूंगी? सुनो, मदद करो। कोई है यहाँ पे मदद करने वाला? कोई तो सुन लो। किसी ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि वो ही भेड़िया था। मदद करो, कोई है यहाँ पे मदद करने वाला? भेड़िया वहाँ गया जहाँ से वो आवाज आ रही थी, और आते ही उसने लिटिल रेड राइडिंग हुड को देखा। बगैर उसे डराए वो उसके पास आया। अपनी आंखों के सामने भेड़िए को देखकर वो बहुत डर गई और वो जोर जोर से चीखने लगी। मदद करो, भेड़िया यहाँ मेरे सामने है, मदद करो। शोर मत करो, शोर मत करो। मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया।
मैं तुम्हारी आवाज सुन के तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने सोचा कि वो उसका बुरा नहीं चाहता, तो उसने चीखना बंद कर दिया। अब मुझे बताओ, तुम इतनी सर्दी में यहाँ कर क्या रही हो? मैं अपनी दादी के लिए कुकीज लेके जा रही थी। ओह, इस सन्नाटे में तो कोई नहीं रहता। तुम मुझे बताओ, तुम्हारी दादी कहाँ रहती हैं? लिटिल रेड राइडिंग हुड ये नहीं बताना चाहती थी कि उसकी दादी कहाँ रहती हैं, क्योंकि उसे भेड़िए पर अभी भी यकीन नहीं था। मैं दादी का घर यहाँ से देख के नहीं बता सकती। अगर आप मुझे जंगल के रास्ते में ले जाएंगे तो मैं वहाँ से बता सकती हूँ। अच्छा, तो चलो मेरे पीछे आ जाओ। और फिर भेड़िया आगे आगे चलता रहा और लिटिल रेड राइडिंग हुड उसके पीछे पीछे। लेकिन भेड़िए ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया हुआ था। एक बार इस लड़की की दादी का घर पता चल जाए, फिर मैं इस लड़की को और फिर उसकी दादी को खा जाऊंगा। अब पता चला मैं कितना चालाक हूँ। कुछ देर गुजरने के बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड और भेड़िए को उनका रास्ता मिल गया। चलो, हम आ गए। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी दादी का घर कहाँ है? लिटिल रेड राइडिंग हुड बस ये चाहती थी कि वो किसी भी तरीके से इस भेड़िए से जान छुड़ाए और अपनी दादी के पास जाए। शुक्रिया, अब मैं यहाँ से आगे जा सकती हूँ। घर अब ज्यादा दूर नहीं है, वो इस रास्ते में पड़ने वाला आखिरी घर और है। उसी वक्त लिटिल रेड राइडिंग हुड ये जान गई थी कि उसने गलती कर दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वाकई? भेड़िए ने अपना मुंह खोला, लिटिल रेड राइडिंग हुड के करीब आया, लेकिन बिल्कुल उसी वक्त गोली की आवाज सुनते ही भेड़िया जल्दी से भाग गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड की जान छूटी और वो जल्दी से दादी के घर की तरफ जाने लगी। दूसरी तरफ शिकारी अभी भी भेड़िए का इंतजार कर रहा था। उसने भेड़िए के पैरों के निशान बर्फ पर देखे। मैं जानता हूँ तुम यहीं हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। बड़े लंबे सफर के बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के घर आ पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया और उसकी दादी की आवाज अंदर से आई। दरवाजा खुला है मेरी प्यारी बेटी, अंदर आ जाओ। अपनी दादी की आवाज सुनकर लिटिल रेड राइडिंग हुड थोड़ा परेशान हो गई। ये आवाज दादी माँ की तो नहीं लग रही। शायद उनकी तबीयत खराब है, इस वजह से ऐसी आवाज आ रही लिटिल है। रेड राइडिंग हुड ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। सारी लाइट्स बंद थीं। अंधेरे कमरे में सिर्फ उसकी दादी अपने बेड पर लेटी हुई थी, एक बड़ा सा ब्लैंकेट ओढ़कर। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए बेटी। क्या लाई हो मेरे लिए? अम्मी ने कुछ कुकीज बनाकर भेजे हैं आपके लिए। उन्होंने बताया कि आपकी तबीयत खराब है और आप आज रात आ नहीं सकेंगी। हाँ मेरी बेटी ठीक कह रही हो, जरा मेरे करीब आओ ताकि मैं तुम्हें देख सकूं बेटा। लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के बेड के करीब आई, लेकिन उसे बहुत अजीब लग रहा था। करीब आ जाओ मेरी प्यारी बच्ची, मेरे और करीब आ जाओ। लिटिल रेड राइडिंग हुड अब अपनी दादी से सिर्फ एक कदम की दूरी पर थी। उसकी दादी बहुत ही अजीब दिख रही थी। दादी माँ, क्या हुआ? आपके कान इतने बड़े क्यों लग रहे हैं? ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह सुन सकूं। और आपकी आंखें क्यों इतनी बड़ी हैं? ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह देख सकूं बेटा। और आपके हाथ क्यों इतने बड़े हैं? ताकि मैं तुम्हें गले से लगा सकूं बेटा। दांत? आपके दांत इतने बड़े क्यों हो गए? ताकि मैं तुम्हें खा सकूं बेटा। अचानक उसकी दादी के बेड से भेड़िया निकला और उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगा। इधर आ जाओ, अब तुम कहीं भी नहीं भाग सकती। लिटिल रेड राइडिंग हुड घर से बाहर निकली और भागने लगी।
लेकिन तेज भागने वाला भेड़िया उसे पकड़ने ही वाला था। जैसे ही वो कूदकर उसे पकड़ने वाला था, उसने देखा कि उसका पैर फंस गया और अचानक उसने देखा कि वो एक पेड़ पर लटका हुआ है। जब लिटिल रेड राइडिंग हुड रुकी और उसने देखा कि भेड़िया एक जाल में बंद हो गया और वो जल्दी से उसके पास गई। बताओ बताओ बुरे भेड़िए, तुमने मेरी दादी माँ के साथ क्या किया है? वो कहाँ है? वो अब तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लिटिल रेड राइडिंग हुड को एक आवाज आई और उसने देखा कि एक शिकारी उसके पास आ रहा है। तुम्हारी दादी बिल्कुल महफूज है बेटी। जैसे ही मुझे पता चला तुम्हारी दादी बीमार है, मैं फौरन उनकी मदद के लिए यहाँ पहुँच गया। और इस भेड़िए की तो मुझे बहुत पहले से तलाश थी। ये सबको नुकसान पहुँचाता है। बुरा भेड़िया, ये सबसे पहले मेरी दादी के घर पे गया, फिर उसने मेरे दादी के कपड़े पहने और मेरी दादी बनने की कोशिश की। चलो पहले तुम्हारी दादी के पास चलते हैं और इसको यहीं लटकने देते हैं। मैं सुबह आकर इसकी खबर लूंगा। और फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड और शिकारी वहाँ गए जहाँ पर उसकी दादी थी। भेड़िया पीछे से चीखा, ए रुको, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ यहाँ पे। अब रात हो चुकी थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड, उसकी दादी और शिकारी उसके घर की तरफ आ पहुँचे। उसकी अम्मी घर के सामने उसका इंतजार कर रही थी। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई। मेरी प्यारी बेटी, तुम कहाँ थी? अरे अम्मी, आप भी बताएं कि क्या हुआ है। मैं आपको सब बताती हूँ अम्मी, मगर पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपकी बात नहीं सुनी और मैं जंगल का रास्ता भूल गई। मैं अब से आपकी बात हमेशा मानूंगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड, उसकी अम्मी, उसकी दादी और शिकारी बहुत मजे करने लगे। गाते हुए, नाचते हुए, खाते हुए अपनी रात मना रहे थे। दूसरी तरफ भेड़िए के लिए ये नए साल की सबसे बुरी रात थी। ऐसी रात उसने कभी नहीं मनाई थी।
Ang kwento ni Cinderella. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, ay may isang magandang dalaga na ang pangalan ay Cinderella. Ilang panahon makalipas ang pagpanaw ng kanyang butihing ina, nag-asawang muli ang kanyang ama kay Lady Puffy. May 2 anak na babae si Lady Puffy na ubod ng yabang. Palaaway sila na kahit isang simpleng brush ay pinag-aawayan nila. Tumigil ka nga! Ano ba? Isoli mo sa akin yan! Ayoko nga! Isang araw, umalis ang ama ni Cinderella para sa isang malayong paglalakbay. Sinamantala ito ni Lady Puffy. Inatas niya kay Cinderella ang lahat ng mabibigat na gawain. Paglilinis ng bahay, pagsisibak ng kahoy, at pagluluto, na lahat ng oras ni Cinderella ay nakalaan na sa gawaing bahay. Sa kabila ng kanyang pagpapakahirap, pinagmamalupitan pa rin siya ni Lady Puffy. Mami, kadiri si Cinderella. Ayoko siya kasalo sa hapunan. Huwag mo din siyang papatulugin sa kwarto namin. Babangungutin kami. Narinig mo ang sinabi ng magaganda kong anak. Humanap ka ng ibang matutulugan sa atik. Ang kawawang Cinderella, napilitan siya na gawing kwarto ang maalikabok na atik. Mula sa maliit na bintana, tinatanaw niya ang hardin. At paminsan-minsan ay kinakausap niya ang puting kalapati. Kamusta, kaibigang ibon? Kik, kik. Sa pagdaan ng mga araw, habang nililinis niya ang bago niyang silid, nakilala niya ang 2 munting daga. Oh, may kasama pala ako sa kwarto. Hi, ako si Cheddar. At ako naman si Mozzarella. Ako si Cinderella. Alam ko, paborito niyo ang keso, diba? Sige, ikukuha ko kayo ng makakain. Yay! Yay! Gutom na kami. Hindi kami makapunta sa kusina, ilang oras na rin nakalipas. Oo nga, may nagbabantay doon na halimaw. Malamang yun ang pusang si Papu. Bukas ng umaga ay ipaghahanda ko kayo ng almusal. Kinaumagahan, tinungo ni Cinderella ang kusina. Di siya gumagawa ng anumang ingay. At nandun nga ang pusa na si Papu, nagbabantay sa butas, nakahanda ng hulihin sina Cheddar at Mozzarella. Tahimik na kumuha si Cinderella ng ilang pirasong keso upang iakyat sa atik. Kaso, nakasalubong niya ang mga anak ni Lady Puffy. Ano yung hawak mo? At saan mo yan dadalhin? Keso lang to, para sa almusal. Ma! Ninanakaw ni Cinderella ang pagkain natin! Ninanakaw? Hindi ako kailanman magnanakaw ng kahit ano. Isa kang magnanakaw at sinungaling pa. Masama kang bata. Umaba ang mga munting daga at nagtakbuhan sila sa kusina para takutin ang masusungit na magkapatid. Daga! Mami, may daga! Natatakot ako! Di lang isang daga! 2! Huhulihin na sana ni Lady Puffy ang mga daga nang may kumatok sa pinto. Dumating ang embahador mula sa palasyo. Ang kanyang kamahalan ang prinsipe ay naghanda ng isang marangal na pagdiriwang sa palasyo bukas ng gabi. Ang lahat ng dalaga ay inaanyayahang dumalo sa engrandeng sayawan na ito. Nang marinig ang tungkol sa sayawan sa palasyo, galak na naghanap ng maisusuot ang magkapatid sa kanilang kwarto. Nais ni Lady Puffy na maging maganda ang kanyang mga anak sa importanteng okasyon na ito. Pinwersa ng makasariling magkapatid si Cinderella na ipaghanda sila ng magagandang damit para sa sayawan. At dumating na ang takdang araw. Pagod na pagod si Cinderella at kailangan pa siyang gisingin ng mga munting kaibigan. Cinderella, gising! Gising!
kailangan mo din pumunta sa sayawan. Ngunit, wala akong may susuot. Ang nag-iisa kong damit ay marumi. Pumikit ka lang, Cinderella. Meron kaming sorpresa para sa'yo. Dinala ng mga munting kaibigan si Cinderella sa gitna ng silid. Itinaas ng munting kalapati ang tabing sa pader gamit ang tuka. Tada! Di ako makapaniwala. Isang bestida. Ang ganda! Isinuot ni Cinderella ang bago niyang damit. Inayos ang buhok at bumaba na sa sala. Ngunit nang makita siya ng mapag-imbot na magkapatid, nagwala ang mga ito sa selos. Hindi hahayaan ni Lady Puffy na makapunta si Cinderella sa palasyo. Gayong nakita niya na di hamak mas maganda si Cinderella sa kanyang mga anak. Kaya naghagis siya ng isang mangkok ng munggo sa dupungan at ipapapulot ito kay Cinderella. Kung makukuha mo ang lahat ng mga butil sa abo at may babalik sa mangkok sa loob ng 5 minuto, makakasama ka sa amin sa palasyo. Sa labis na kagustuhan ni Cinderella na makadalo sa sayawan, sinimulan niyang pulutin ang mga butil. Nang makita ng mga munting kaibigan ang kawawang kalagayan ni Cinderella, tumulong sila agad. Sa loob ng 5 minuto, ay naibalik nila ang lahat ng butil sa mangkok. Nagmamadaling hinabol ni Cinderella si Lady Puffy na paalis na at pinakita niya ang mangkok na puno ng butil. Ganon pa man, ay wala talagang balak si Lady Puffy na isama si Cinderella, kaya idinahilan niya ang marungis na damit ng dalaga. Iniwan nila si Cinderella sa bahay at nagtungo na sa palasyo. Ang kawawang Cinderella, malungkot niyang tinungo ang hardin at doon siya umiyak. Sa ilalim ng puno ng hazelnut na itinanim ng kanyang ina, maraming taon na ang nakalipas. Maya-maya, nagsimulang gumalaw ang puno ng hazelnut at lumitaw ang isang magandang diwata. Ang pangalan ko ay Liabel. Narito ako upang tulungan ka. Huwag ka nang malungkot. Ikaw ay makakadalo rin sa engranding sayawan. Ngunit paano? Sa itsura kong ito? Ako ang bahala. Kailangan ko lang ng isang kalabasa. Yung ibang kailangan ko, nandito na. Bumalik si Cinderella na may daladalang kalabasa. Ikinumpas ni Liabel ang kanyang magic wand at ang kalabasa ay biglang naging isang magandang karwahe. Ang mga daga ay naging magagandang kabayo at ang kalapati ay naging bihis na kutsero. Di makapaniwala si Cinderella sa kanyang nasaksihan. Wow! Paano mo nagagawa yan, Liabel? Ikinumpas uli ng diwata ang magic wand at biglang nabihisan si Cinderella ng isang napakagandang asul na bestida. Sa kanyang mga paa ay lumitaw ang kumikislap na kristal na sapatos. Mukha na akong prinsesa. Salamat, Liabel. Oras na para pumunta sa palasyo. Bilisan mo na. Bago umalis si Cinderella, ay nagbigay ng babala ang diwata. Huwag mong kakalimutan. Kailangan mong makabalik bago maghating gabi. Dahil kung hindi, mawawala ng bisa ang salamangka at lahat ay babalik sa dating anyo. Nakinig naman ng mabuti si Cinderella sa diwata at sa wakas ay tumungo na sa sayawan. Ang karwaheng hugis kalabasa ay huminto sa harap ng malaking palasyo. Taglay ang kahanga-hangang kagandahan, pumasok si Cinderella sa bulwagan. Lahat ng bisita ay napatingin kay Cinderella. Sino kaya ang napakagandang dalagang ito? Maski sina Lady Puffy at mga anak nito ay hindi nakikilala si Cinderella sa anyo ng magandang dalaga. Nilapitan ni Prinsipe Leo si Cinderella at umibig siya sa unang pagkasilay sa dalaga. Magandang binibini. Maaari ba kitang maisayaw? Tila nawiwili si Cinderella sa pakikipagsayaw sa gwapong prinsipe.
nalilimutan na niya ang tungkol sa oras. Tamang-tama, bago tumungtong ng 12:00 sa orasan, naalala niya ang babala ng diwata. Huwag mong kakalimutan. Kailangan mong makabalik bago maghating gabi. Dahil kung hindi, Agad na iniwan ni Cinderella ang prinsipe at tumakbo palabas ng palasyo. Saan ka pupunta? Hindi ko man lang alam pangalan mo. Patakbong bumaba si Cinderella sa hagdanan ng palasyo nang biglang nahubad ang isang kristal na sapatos. Ngunit wala nang oras para balikan pa niya ito. Mabilis siyang sumakay sa karwahe at lumisan. Hanapin ng may-ari ng naiwang sapatos. Kung kinakailangan ipasukat sa bawat dalaga sa buong bayan ang sapatos na ito. Pagtungtong nga ng 12:00, lahat ay bumalik sa dating kaanyuan. Umuwi na rin si Cinderella at sa silid niya sa atik, iniisip niya ang tungkol sa malahimalang gabi na nakasayaw niya si Prinsipe Leo. At ramdam ng puso niya na umiibig na siya. Ngunit imposible na makilala siya ng prinsipe sa kanyang luma at madungis na pananamit. Lumipas ang panahon, nagpatayo ng isang malaking mansyon ang prinsipe sa gilid ng palasyo. Ito ay para sa pinakaiingatan niyang kristal na sapatos. Lahat ng dalaga sa bayan at mga karatig bayan ay bumibisita sa lugar na ito upang sukatin ang sapatos. Pati nga sina Lady Puffy at mga anak nito ay bibisita rin sa sikat na mansyon. Ngunit hindi nila isasama si Cinderella. Dito ka lang sa bahay. Imposible na sa iyo ang sapatos. Tama! Magkakasya ang sapatos kung hindi kay Cassandra, syempre sa akin. Pero ako rin naman ay isang dalaga sa bayan na ito. May karapatan din ako na sukatin ng sapatos. Ngunit hindi man lang pinakinggan ni Lady Puffy si Cinderella. Bagkus ay kinulong pa niya ito sa loob ng bahay. At syempre, hindi kumasya ang kristal na sapatos sa paa ni Cassandra. At hindi rin kay Jezabel. Sige pa. Konti na lang. Kakasya yan. Kinagabihan, habang maliwanag ang ilaw sa mansyon, nakatakas si Cinderella sa tulong ni ng mozzarella at cheddar. Nakarating siya sa marilag na mansyon. At nilapitan niya ang kumikislap na kristal na sapatos. Sa aktong isusukat pa lang niya ang sapatos, pumasok naman si Prinsipe Leo sa silid. Tigil! Huwag kang gagalaw. Baka masira mo ang sapatos. Hindi po. Sa akin po talaga ang sapatos. Nagsasabi siya ng totoo. Siya si Cinderella. Buong tapang na isinuot ni Cinderella ang sapatos sa harap ni Prinsipe Leo. At napagtanto ng prinsipe na sukat nga kay Cinderella ang sapatos. Ikaw? Nung gabi na yun, ikaw yung magandang dalaga na sinayaw ko nung gabi na yun. Maaari ko ba malaman ang pangalan mo? ang pangalan ko ay Cinderella. Maaari mo ba akong pakisalan, Cinderella? Masayang sinagot ng oo ni Cinderella ang pinakamamahal niyang prinsipe. Nagpakasal sila sa malaking kastilyo at habang buhay silang naging maligaya. Noong unang panahon, mayroong isang mabait na reyna na naninirahan sa isang kastilyo na napalilibutan ng mahiwagang kagubatan. Habang pinapanood ang niyebe sa taglamig, ang reyna ay nangangarap ng gising. Naririnig niya ang mga bata na naglalaro sa snow sa labas. Binuksan niya ang bintana upang tanawin ang mga bata at hinangin ang paboritong pulang panyo ng reyna. Nahulog ito sa mismong tuktok ng snowman na itinatayo ng mga bata. Kumaway at nagpasalamat sila sa mabait na reyna. Sana ay magkaanak ako ng babae. May kutis na simputi ng snow at busilak ang puso. Lumipas ang mga buwan at nagkatotoo ang pangarap ng mabait na reyna. Ang hari at reyna ay
ay nabiyayaan ng sanggol na babae, ang pinakamaganda sa mundo, at pinangalanan nila siyang Snow White. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay di nagtagal. Nang si Snow White ay maliit na bata pa, namatay ang reyna at naging isang bituin sa kalangitan. Pagkalipas ng ilang taon, pinakasalan ng ama ni Snow White ang isang babaeng nagngangalang Hela. Namamangha ang hari sa kagandahan ng bagong reyna at sa gayon ay hindi niya napagtatanto ang kayabangan nito. Salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat? Ikaw, aking reyna. Ikaw ang pinakamaganda sa lupain. Wala nang mas gaganda pa sa akin. Sa pagdaan ng panahon, si Snow White ay lumaki at naging isang magandang binibini. Ang kanyang ama ay maglalakbay naman kasama ang kanyang mga sundalo at niyakap niya ang anak bago siya umalis. Huwag kang malungkot, Snow White. Babalik din ako. Isang araw, tinawag ng masamang loob na si Hela ang kanyang tagapagsilbi na si Dunkov. Alisin mo ang tabing ng salamin ko, Dunkov. Ngunit nang hatakin ni Dunkov ang sapin, tumakip ito sa kanyang sarili. Hay naku! Lumabas ka na nga! Habang hinahangaan ng reyna ang sarili sa salamin, nagsambit siya ng, "Salamin, salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat?" Sa lupaing ito, aking reyna, hindi na ikaw kundi si Snow White ang pinakamaganda. Nagngingit-ngit sa galit si Hela. Walang sino man ang maaaring maging mas maganda kaysa sakin. Tila lumindol ang buong kastilyo sa kanyang galit. Nais niyang sirain ang kagandahan ni Snow White. Gumawa siya ng isang plano at inutusan ang mga ngaso ng kaharian na dalhin si Snow White sa kagubatan at patayin ito. Ibalik mo sa akin ang kanyang puso. Pinagkakatiwalaan ni Snow White ang mga ngaso ng kaharian, kaya't sumama siya rito. Habang daan, nakakita siya ng isang sugatan na ibon sa lupa. Pinulot niya ang ibon upang lapatan ng lunas ang pakpak nito. Sa likuran niya ay ang mga ngaso. Napalihim na kumuha ng palaso at inumang ito kay Snow White. Ngunit nakita niya na ang dalaga ay may mabait na puso dahil sa pag-aalaga nito sa ibon. Napagpasyahan niyang mali ang patayin si Snow White. Snow White, napag-utusan akong kitilin ang iyong buhay, ngunit di ko kayang pumatay ng mabuting tao na tulad mo. Sino ang gustong pumatay sa akin? Si Reyna Hela. Tumakas ka na at magtago. Naisip ng mga ngaso na linlangin ang reyna. Manghuhuli siya ng isang baboy ramo at ang puso nito ang siyang dadalhin niya sa reyna. Sa gayon, iisipin ni Hela na patay na ang prinsesa. Sa tindi ng takot, tumakbo ang prinsesa sa madilim na kakahuyan. Di niya alintana ang matutulis na sanga at mga paniki sa gabi, hanggang sa hindi na niya kaya pang tumakbo. Bumagsak siya sa tabi ng isang puno at nakatulog sa malamig at madilim na kagubatan. Nang marating ng mga ngaso ang kastilyo, dumiretso siya sa reyna. Natupad ko na ang iyong utos. Kinuha ni Reyna Hela ang kahon at sinuri ang puso. Napaniwala siya na patay na si Snow White at ang kanyang halakhak ay umalingaw-ngaw sa kastilyo. Nang sumikat ang araw, nagising si Snow White sa gitna ng kagubatan at doon sa harap niya ay isang cute na bahay. May magandang hardin at mababang bakod, maliliit na mga bintana, may doorbell, at isang bilog na berdeng pintuan. Pinatunog niya ang bell, ngunit walang sumagot. At nang kakatok na siya,
bumukas ang pinto. Sa loob, lahat ng kagamitan ay maliliit. Naanimoy nasa loob siya ng isang laruang bahay. Maliliit na kaldero, maliliit na kutsara, at mga tasa. Nang matagpuan niya ang isang maliit na mangkok ng lugaw, sa gutom ay kinain niya ito. At nakatulog siya sa isang maliit na kama. Sa di kalayuan, ang mga minero na may-ari ng bahay ay pauwi na galing sa trabaho. Sa sandaling pumasok sila, alam nila na may mali, kaya tahimik silang nagmatsyag at nagbulungan. May kumain ng tinapay ko. May gumamit din ng plato ko. May natutulog sa kama ko. Ayan oh. Wow, ang gandang babae. Ay! Naku! Ayan, saluin mo! Dali, aray, Oh. aray! Dali, aray, aray! Naku, mainit eh! Saluin mo! Ayan! Phew! Oo. Shh! Nagising siya. Nagtago siya sa kumot. Huwag ka matakot sa amin, Binibini. Kami ang 7 duwende. Ako si Ace, siya si Jolly, ito naman si Angry, ayan si Curious, si Silly, si Shy, at ito naman si Lazy. Ako si Snow White. Pasensya na po, pumasok ako sa bahay niyo. Isinalaysay ni Snow White ang lahat ng nangyari sa kanya. At nalungkot sila sa narinig na kwento. Kaya pumayag sila na manatili si Snow White sa kanilang maliit na bahay. Ngunit, sa isang kondisyon. Mahilig kami kumanta. Maganda ba ang tinig mo, prinsesa? Snow White is my name. I'm far away from the castle today. I stare at the sky and speak to my mother. She is now among the stars. I have found happiness in this forest. My little friends protect me here. Their tiny hearts are now full of hope. Good little hearts will win again. Samantala, sa ibayong lupain, mayroong isang gwapo na prinsipe. Ang pangalan niya ay Antoine. Mahilig siyang lumabas sa gabi at tumingin sa mga bituin na nagpapaalala sa kanya ng mga taong mahal niya. Isang gabi, nakita niya ang mukha ni Snow White sa kalangitan at nagkaroon siya ng pagnanais na hanapin ang dalaga. Isang diwata ang nagsabi na nasa panganib ang Binibini at binigyan pa siya ng isang kwintas na may hugis puso. Kaya't sakay ng kanyang kabayo, naglakbay na si Prinsipe Antoine upang hanapin ang magandang mukha sa langit. Samantala, balik sa kastilyo, ang reyna na may masamang kalooban ay muling haharap sa mahiwagang salamin. Dankov! Alisin ang tabing ng salamin. Sumunod naman si Dankov, ngunit sumabit ang tabing sa salamin at muntik na itong matumba. Si Dankov ay kabado sa harap ng reyna, kaya lagi tuloy siyang pamali-mali. Siyang dahilan kung bakit patuloy na naiinis sa kanya ang reyna. Nang makalabas na si Dankov, nais marinig ni Reyna Hela mula sa mahiwagang salamin kung gaano siya kaganda.
Salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat? Paumanhin, aking reyna. Ngunit si Snow White ang pinakamaganda. Hindi! Akala ko ba patay na si Snow White? Buong gabi nagising ang reyna. Gumagawa ng masamang balak na patayin si Snow White. Nakaisip siya ng mahusay na paraan na ikubli ang sarili sa anyo ng isang maliit na kuneho. Kinaumagahan bago umalis ang mga duwende, isa-isa silang humalik kay Snow White sa pisngi at naglakad na papunta sa minahan. Prinsesa, huwag mong pagbubuksan ng mga estranghero ha. Delikado. Mukhang mapayapa naman, kaya't nagdilig si Snow White ng mga bulaklak sa hardin. Napansin ng prinsesa ang isang maliit na kuneho na nakaupo sa hardin na tila nasaktan. Tumungo siya at kinuha ito at dinala sa loob ng bahay. Nilapatan niya ng lunas ang nasaktan na paa ng kuneho at hinayaan itong magpahinga sa kama. Kunwari ay natutulog pero sa sandaling lumabas ng silid ang prinsesa, dumilat ang kuneho at tumingin sa paligid. Tapos, ito ay tumalon-talon-talon at bumalik sa dating anyo ni Hela. Ito mismo ang pinaplano niya. Pinatakan niya ng lilang laso ng unan. Nang sa gayon ay kapag matutulog doon ang prinsesa, mamamatay siya sa lason. Napagod si Snow White sa maghapong paghahardin, kaya't pumasok na siya upang magpahinga. Mahihiga na sana siya sa unan na may lason nang marinig ang mga duwende na nakauwi na. Sinalubong sila ng prinsesa sa pintuan. At pagkatapos ng masarap na hapunan, sumayaw sila buong gabi. Sa pagod ay nakatulog si Snow White sa harap ng pugon. Mabuti na lang at naiwasan niyang matulog sa nakalalasong unan. Nang makabalik ang reyna sa kanyang kastilyo, inabutan niya si Dunkov na nakatulog na sa pintuan. Sa pag-aakalang nagtagumpay siya, pinuntahan niya ang mahiwagang salamin. Salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat? Aking reyna, si Snow White na kasama ng 7 duwende ay mas maganda kaysa sayo. Hindi! Ako! Ang dapat na pinakamaganda! Ako! Gagawa uli ako ng plano na papatay kay Snow White. Makalipas ang ilang araw, habang sinusulsihan ni Snow White ang ilan sa mga lumang damit ng mga duwende, nakarinig siya ng katok sa pintuan. Kumatok ito ng 3 beses. Sumilip si Snow White sa pintuan upang makita kung sino ito. At naroon ang isang matandang babae na may basket ng mansanas. Sino po sila? Ako ay tindera ng masasarap na mansanas. Nais mo bang tumikim ng isa? Nung una, natatakot si Snow White. Kaya lang, mahilig talaga siya sa pulang mansanas. Eto magandang ining, libreng patikim. Tinanggap ni Snow White ang mansanas na inabot ng matanda. At kumagat siya. Ang mansanas ay may lason. Natumbas siya sa lupa bago pa man makahingi ng tulong. Sa di kalayuan, nagpapahinga si Prinsipe Antoine sa lilim ng puno. Malayo na ang nalakbay niya upang hanapin ang magandang mukha na nakita niya sa kalangitan. Nang may natanaw siyang isang matandang babae na naglalakad. Kakausapin sana niya nang biglang nagbagong anyo ito at naging si Reyna Hela. Ang prinsipe at ang kabayo ay nagitla. Nagpasya tuloy siya na huwag nang magtanong ng direksyon. Kinagabihan, pag-uwi ng mga duwende, nakita nila si Snow White nakahandusay
at wala ng buhay. Labis silang nalungkot na parang nadurog ang mga puso nila sa libu-libong piraso. Gumawa sila ng isang magandang kristal na kabaong at pinalutang ito sa pinakamahabang ilog upang makita ng lahat ng tao ang kaniyang kagandahan. Sa may baybayin ng ilog, naglalakbay ang prinsipe at napansin niya ang kristal na kabaong sa bangka. Nakilala niya agad ang mukha ng babae. Nalungkot ang prinsipe. Binuksan niya ang takip ng kabaong. Kinuha sa bulsa ang kwintas na stardust at isinuot ito sa prinsesa. Paalam aking prinsesa, magniingning ka tulad ng isang bituin. Nasaan ka man? Pagdakay, gumalaw si Snow White. Ang kwintas na stardust ay nagbigay ng himala. Nabuhay si Snow White. Nang magising, namangha si Snow White sa gwapong prinsipe na nakatayo sa tabi niya, na nagligtas sa kanya. Nang sa wakas ay nakabalik sa kastilyo ni Snow White, ikinuwento niya at ni Prinsipe Antoine sa hari ang lahat-lahat. Nang malaman ng hari ang ginawa ni Reyna Hela kay Snow White, pinalayas niya ito sa kaharian. Ang mahiwagang salamin at lahat ng pag-aari ng reyna ay kinandado ng hari sa isang tagong silid sa kastilyo. Maraming buwan ang lumipas. Umibig sa isa't isa sina Snow White at ang prinsipe at nagkaroon ng magandang kasalan sa kastilyo. Siyempre, imbitado ang mga duwende sa pagdiriwang at namuhay sila ng maligaya magpakailanman. Maligayang bate! Congrats! Yay! Woo!